নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগ কাৰ্যসূচীত আজি অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা গ'ল তাতোতকৈ ভাল কথাটো হৈছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা ডিঙিত লৈ যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে যোগ দিৱস সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস বিশ্বৰ 177খন দেশে আজি পালন কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এই বছৰ যোগ দিৱসৰ থিম আছিল স্বয়ং আৰু সমাজৰ বাবে যোগ অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা ডিঙিত লৈ যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসে 10 বছৰৰ ঐতিহাসিক যাত্ৰা আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে 2014 চনত মই ৰাষ্ট্ৰসংঘত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিলো আৰু হেয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই প্ৰস্তাৱক 177খন দেশে সমৰ্থন কৰিছিল আৰু এয়া এক অভিলেখ আছিল এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মই এতিয়া বিশ্বত জলৈকে যাওঁ বিশ্বৰ নেতাসকলে এতিয়া যোগৰ কথা কয় সকলোৱে ভাল পায় যোগাভ্যাস আৰু এনেধৰণে যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো চাওক এয়া হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ দৃশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে যোগ কাৰ্যসূচীত আমি ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনি টক্সৰ দৰ্শকক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেইবা শতাধিক লোকে একেলগে এই যোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা গ'ল আমাৰ এই বিশেষ ভিডিঅ' ক্লিপটো এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনি টক্সৰ দৰ্শকক এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডিঙিত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা ডিঙিত লৈ এনেধৰণে যোগাভ্যাস কৰা দেখা পোৱা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেৱল আজিয়ে প্ৰথম নহয় এইবাৰে প্ৰথম নহয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগাভ্যাস কৰাৰ সময়ত গামোচা লৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জলৈকে যায় তাতে প্ৰত্যেকটো যোগ দিৱসতে আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনেধৰণে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা ডিঙিত লৈ যোগাভ্যাস কৰে আৰু আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যোগাভ্যাস কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত যোগ দিৱস কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যোগ দিৱসৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসে 10 বছৰীয়া ঐতিহাসিক সময় আজি পাৰ কৰিছে তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে ময়ে প্ৰথম যিয়ে নেকি যোগ দিৱস পালন কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিলো আৰু এই প্ৰস্তাৱক 177খন দেশে সমৰ্থন জনাইছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা অৰ্থাৎ 2014 চনৰ পৰা 2024 চন পৰ্যন্ত 177খন দেশে পালন কৰি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আৰু ইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যোগাভ্যাসত ব্যস্ত হৈ আছে পুৱাতে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমান্তৰালকৈ কেইবা শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে এই যোগৰ কাৰ্যসূচীত এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে নিজৰ ভাষণত কি কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে साथियों ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता
जितना बारिश के बावजूद भी, और जब श्रीनगर में बारिश होती है तो ठंड भी बढ़ जाती है, मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी, और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है, मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहां है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है, और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है, तो उसकी थकान होती है।
और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा। इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है।